Everyone, welcome to the SST classroom, and we are studying chapter number 2, People as a Resource of Economics, and this one is the part 5 of the video. Let's have a recap what we started in the previous video: quality of population, education, health, birth rate, death rate, IMR, life expectancy, calories, etc., and the skill development also. Let's move further कि what if we ignore or a government ignore these qualities of the human resources. अगर गवर्नमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड द स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर करती है तो व्हाट विल हैपन, what kinds of problem is going to raise there. So what will be there? Unemployment, a very major issue raise in the country, and it is not only about the India, anywhere in the world. If the human resource are not taken care, then this problem must be arise. What is unemployment? Unemployment is a situation when a person is willing to work but fails to find any gainful work or job. Means a person काम करना चाहता है, he finds the work also, लेकिन उसको काम नहीं मिला. This is called unemployment. How many types of unemployment are there in India? There are 5 types of unemployment in India: disguised, seasonal, structural, educated, and technical. One by one, we'll study all the unemployments. The very first is disguised unemployment. It is a situation in which more people are engaged in an activity than required. Means, suppose the one field is there. Let's take an example of a field, like whatever room you are having, and a people is having a piece of land जस्ट लाइक योर रूम. जितना बड़ा आपका रूम है उतनी ही बड़ी उसके पास एक लैंड है जिस पे वो फार्मिंग करता है. ऑन दैट पीस ऑफ लैंड 5 person or 4 persons are required to do work. Means 4 people are enough to do the farming at the place. But instead of 4 people, 9 persons are working on that place. So those additional 5 persons will be disguised. Why? Reason is, देखिए, the land is fixed. ठीक है, लैंड में कोई इंक्रीज नहीं हुआ. The piece of land is fixed. Then whether the 2 person do the farming in that field, 4 person, 5 person or 10 person, productivity will be same. प्रोडक्टिविटी का मतलब, सपोज इट्स अ वीट एग्रीकल्चर, मतलब वो लोग वीट ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन द 4 people आर डूइंग वर्क एट इन द पीस ऑफ लैंड, उसमें फार्मिंग कर रहे हैं, 50 kg और 1000 kg वीट इज़ ग्रोन. ठीक है, इफ़ द 9 people इज़ गोइंग टू वर्क ऑन देन व्हाट हैपन, क्या वो 1000 से 2000 हो जाएगा? नो. वाई? बिकॉज प्रोडक्टिविटी एंड द लैंड एरिया इज़ द सेम. It will not increase. Even क्या होगा, the percentage of the wages that they were getting or the food they were getting, that will reduce. वो उल्टा घट जाएगी. Means suppose the 50 kg wheat were there, and so those 50 kg they divide into 4 peoples. अब मान लीजिए, अब if the 9 people are working, then what will happen, उसकी quantity तो और कम हो जाएगी ना. Then they will sell here and there. So that amount is going to reduce. It means कि this is the disguised unemployment, and if the more people works at a place than the requirement, then it reduce the wages and the income. It do not increase the employment. इसको जो है अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही रखा जाता है. एंड बेसिकली दीज थिंग्स हैपन इन आवर कंट्री to keep more laborers and for more productions. Like I talk you about the farming, ये तो खेत की बात थी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द इंडस्ट्री, तो इन इंडस्ट्रीज तो पीपल यूज टू कीप द वर्कर्स. अब वाई वहाँ पे भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होता है. वाई?
because they used to keep the workers number of workers so that they can get more higher productivity. But उसका जो profit है ना, those workers do not get, because what happened when they have ना many numbers of people as a worker, जब उनके पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, मतलब दे आर हैविंग सो मैनी ऑप्शंस, तो इससे एक तो किसी कोई भी कभी भी अपना जॉब अगर छोड़ के जाता है तो दे नेवर वरी. व्हाई? they are having n number of peoples. One is going, then the 10 place peoples are standing outside to do the work. Secondly, the wages gets low. अ पर्सन, मतलब जो एक पर्सन वर्क कर रहा है जिस वेजेस में, उतने में वो कम से कम 2 3 4 5 पर्सन रख लेते हैं, एंड दे गिव्स द लिटिल लिटिल अमाउंट टू द एवरीवन एंड टेक्स द मोर वर्किंग फ्रॉम देम, right? So this is called the disguised unemployment, and it is a very important issue in our country, because you can see everywhere disguised unemployment is arising, जहाँ पे आप mostly it happens in the factories, at the construction sites and the areas, because there the people used to keep the number of peoples than the required. Next, seasonal unemployment. Seasonal, very clear from the season. It is a type of unemployment under which the people are employed during some parts of the year and remain without work during the rest of the year owing to the seasonal nature of work. It means the people, any of the person is getting employment for a particular season, and after that season they becomes unemployed. Like farmers used to do the cropping. There are the seasons also, but there are so many farmers. देखो, the different seasons we have studied about the farming, Rabi, Kharif and Zaid, ठीक है. But it's not like that all the farmers are growing all the seasons crops. It depends on the climate, land, soil, water and all the things. So whatever crops they are growing, if they are growing a Rabi crop, then they will be unemployed in the season of the Kharif. If they are growing the Kharif crop, they will be unemployed in the season of the Rabi. So in this way, the things which are having only a particular season, तो कुछ पर्सन्स जो होते हैं, दे बिकम एम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड फॉर द रिमेन ऑफ द ईयर दे रिमेन unemployed. This is called the seasonal unemployment. Like one more is here, example is here, sugar industry. What does sugar industry means? Sugar industry means it runs only when the sugar cane is grown. When the sugar cane is not grown, this industry is closed. तो क्या होता है, इस इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, दे वर्क ओनली फॉर द डेट टाइम पीरियड when the sugar cane is grown and sugar has been maken from that, and later when it is not there, so they will be unemployed. So this is called seasonal unemployment. It is also largely spreaded unemployment in our country, बहुत ज़्यादा spreaded है, because most of the people are indulged in the farming. That's why the seasonal unemployment is spreaded, and the disguised is also there in the farming. Next one is the structural unemployment. It is a situation in which unemployment occurs. ये क्या है structural? This kind of employment occurs when some of the conditions are not fulfilled, like lack of capital. Suppose a person is not having capital, means they are not having money, or either the government is not having that much of capital so that they can provide employment to their people. अपने देश के लोगों को वो ठीक से काम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे. दैट इज़ दी स्ट्रक्चर. इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज. लैक ऑफ रिसोर्सेज मीन्स सपोज water, air, minerals and whatever the resources you have heard, if these resources are not available, so these resources became the reason of unemployment. And what happened then, the people used to migrate from one place to another place. और उससे क्या होता है कि दूसरे places पे जो working है, वहाँ पर जो work force है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, and the wages gets less, लो हो जाते हैं, क्योंकि मैन फोर्स वर्क फोर्स ज़्यादा हो गई है, मतलब काम की डिमांड ज़्यादा है.
तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में तो उसके जो प्राइसेस हैं वो लो हो जाते हैं, राइट. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर हैविंग द नेचुरल रिसोर्सेज बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली. द गवर्नमेंट इज़ नॉट डोंट नो कि रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना है. देन इट बिकम्स अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन क्रिएट द अनएम्प्लॉयमेंट. सरप्लस वर्कर्स एज कम्पेयर टू डिमांड. देखो सरप्लस मीन्स अगेन द सेम थिंग, दैट इज़ द डिस्गाइज्ड. डिस्गाइज देखा था ना कि मोर देन द रिक्वायर्ड पर्सनस, वैसे ही सरप्लस वर्कर मीन्स द मोर देन द रिक्वायर्ड पर्सनस आर वर्किंग, देन डिमांड से ज़्यादा है तो क्या करता है ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है. So this is structural unemployment. Next one, educated unemployments. It occurs when the spread of education is not planned according to the needs of the economy. Educated unemployment जो है ये तब फैलता है when it is not planned कि हमें अपनी कंट्री के लोगों को किस तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए so that we cannot have an army of the educated unemployment. Because what happened, many of the people you can see around yourself to 10th pass, 12th pass, graduation, post graduation, even the higher degrees, and though they are unemployed, not getting the working. Why it happens? Because the educational system is not focusing particularly on those things which is required for the employment purpose only. And whatever the things are going on, though they are having some skill development issues are also there, because it is also not been implemented very well in India. जो स्किल डेवलपमेंट है हमारी कंट्री में वो भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. तो एजुकेशन के साथ में स्किल डेवलपमेंट भी वेरी लेस है, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. चलो सपोज़ अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक द पासिंग एंड द फेलिंग ग्रेड्स. I hope you all must be aware that below the 33% a person got fail, and above 33% he is pass. Whatever अब कितने उसमें चाहे वो थर्ड डिवीज़न हो, चाहे वो सेकेंड डिवीज़न हो, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो. अब what happened that कि whenever any of the government job, any of the jobs came from the side of government, कि किसी भी फील्ड में जॉब निकली है उसको फिल करना है. व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ओवर देयर, दैट ओनली द 60% स्टूडेंट्स कैन फिल द वैकेंसीज. मतलब दोज हु हैव बीन क्रॉस्ड द 60% हैज़ कैन फिल द जॉब्स ओनली. अब नाउ व्हाट हैपन, यू हैव मेड द क्राइटेरिया दैट यू आर गोइंग टू पास द स्टूडेंट एट द 33%, है ना, एंड यू आर गिविंग द जॉब वैकेंसीज एट द 60%. So where that 33 to 59% student will go? There is no planning about it. Okay, what we have to do if the below for the below percentage area. So these kinds of things needed planning, and if it is not taken care, it will create a huge army of educated unemployment. This is called educated unemployment, right? Next one, technical unemployment. Basically it occurred due to the industrialization, because the industries, the machines, the computers and the things has taken the place of the humans. Instead of 10 or 20 people, only a single machine is required for their all the works, and so it creates the technical unemployment. Other things are also there, like we have arrange the things, like government said that we are going to make our country technical or digital, and it will be a digital country and will work everything on the computer and the like. But government has not seen that whether the people are able to run the computer, whether they are having the computer. If they are not having, and you are saying that we are going to make the country technical, we are going to make the country digital, only the digital working will be there, so what will be happen then? People are not knowing how to do the computer work, so definitely it will create the employment. First you have to train their skills, because you have to train the human resource na, कि they will able to run the different machines, different computers and all these things. Then only you can make your country digital and technically good. Industrialization you can go do. And if you say कि I am just bringing the new
machines from the other countries, we are making the machines and all, and the people is not knowing how to run the machines. उस मशीन को उसको चलाना नहीं आता, एंड तो अनट्रेन्ड पीपल इफ गोइंग टू डू द वर्क, देन व्हाट हैपन, डेफिनेटली आपको लॉस ही होने वाला है उसमें, because the training is very must for it. So the technical unemployment is basically when we start something new, we do the industrialization or we use the different gadgets and for the working the computer system, basically computer reduce and the machines, ये चीज़ें जो हैं ये technical unemployment को increase करती हैं. This is the technical unemployment here. तो टोटल 5 unemployment I told you. And what if the government is not taken care of the unemployment. चलिए अब मान लेते हैं इतनी सारी problems we have studied कि this is unemployment, these are the types of unemployment and this and that, but why to look after it? इसको देखने की ज़रूरत क्या है? क्या हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते? और गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर, मतलब क्या इसके बिना हमारी कंट्री रन नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी. It is a very major issue. What are the drawbacks of unemployment if the unemployments occurred in the country? अगर वो है और अगर वो बढ़ता रहता है तो उससे कंट्री को क्या क्या लॉसेस होंगे? क्या होगा? लॉस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. फर्स्टली जो कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स है उसका लॉस होगा. मीन्स जो आपके पास अच्छी रिसोर्सेज हैं, यू आर हैविंग द ह्यूमन रिसोर्स बट यू कैन नॉट टेक देम फॉर द वर्क. मीन्स मान लीजिए जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि जॉब वैकेंसीज निकली और पीपल नहीं भर पा रहा है, कि उसको स्किल नहीं आती है, कि उसका एजुकेशन क्राइटेरिया कंप्लीटेड नहीं है, या उसने उस फील्ड में वर्किंग नहीं करी है. तो आपके पास वैकेंसीज भी हैं काम कराने के लिए, बट ह्यूमन रिसोर्स भी है काम कराने के लिए, बट स्टिल यू कैन नॉट टेक. वाई? बिकॉज यू हैव नॉट डन द ट्रेनिंग एंड यू हैव नॉट डन द प्लानिंग अकॉर्डिंगली. सो वॉट हैपन देन? यू लॉस द रिसोर्स. मतलब आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते थे मगर कर नहीं पाए, बेकार हो गई. इंक्रीज़ इन पॉवर्टी, डेफिनेटली इट इंक्रीज द पॉवर्टी रेशियो रैपिडली. बहुत स्पीड से ये पॉवर्टी रेशियो को बढ़ाता है. Social problems occurred. Social problems means like terrorism, dishonesty, immorality, gambling, bribery, theft, robbery. मतलब क्राइम जैसी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से सोसाइटी में इंक्रीज होती है. वाई? बिकॉज when the people is not having to do the work, anyhow they wants money, anyhow they want to survive their life, and for that they are ready to do any of the wrong thing. They don't think whether it is right or wrong, they just do the thing because they want the food and they also want to live a good life. That's why. So these social problems created when the unemployment is raised in a country. Next is political instability. Political instability. Unemployed youths are easily enticed by the anti-social implement as the government fails to provide them work. इसमें क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे होती है? हाउ द पर्सन whomsoever is a political leader or representative, easily they can misguide the youth in the name of the working and the employment, and in that way youth can take the wrong decision. उसमें क्या हो सकता है? वो रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं. मतलब उनको एक तरीके से भड़काया जा सकता है, उनको मिसगाइड किया जा सकता है, एंड दे कैन टेक द रॉन्ग डिसीजन. तो इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत हो जाती है. दे लॉस देयर फेथ इन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. मतलब जो यूथ्स है वो अपनी डेमोक्रेसी में जो होप होती है, जो फेथ होता है, उसको खो देते हैं. मतलब दे डोंट बिलीव ऑन द गवर्नमेंट देन कि दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस एंड वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट, और इसको हटाओ दूसरी लेकर आओ. तो इट क्रिएट्स अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एवरीवेयर. देन last one is the exploitation of the labor, and if the unemployment is there, the labor gets exploited a lot. Why? Because so many people are unemployed, and due to that the people who are giving the jobs and the employment to the persons, they do the exploitation with the labors, because they are having so many options, so many people are there to do the work. So if you are if you gets agree to do the work on their बेसिस, मतलब उनकी जो भी कंडीशंस है, सिचुएशन से आ गया तो आप उनके ऊपर काम करिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो यू जस्ट गो वी आर हैविंग मैनी ऑफ द ऑप्शंस. तो इन दिस वे दे एक्सप्लॉइट द लेबर्स ऑल्सो.
So it, in this way, it creates a problem. It becomes, so whatever we studied in this chapter, let's have a quick summary. I told you human resource, economic and non-economic activity, types of economic activities. I told you primary activity, secondary, tertiary, then quality of population, education, health, skill development, unemployment, types of unemployment, and what if it is not taken care of properly. अगर हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है. तो वाई वी स्टडीड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट अ ह्यूमन रिसोर्स इज़ फॉर कंट्री and how a government can convert their human resource into a good human resource or into a bad human resource. It's needed a planning, it needed lot of efforts in the working from the government side also and from the people side also. Human resource themselves need to ट्रेन देम सेल्फ. लाइक जैसे आपको मैंने मिष्टी और दारू की स्टोरी सुनाई थी, तो कुछ एफर्ट्स जो हैं वो खुद को हमसे भी करना, मतलब ह्यूमन को भी करने होते हैं. दैट वी शुड टेक द एजुकेशन, वी शुड टेक द ट्रेनिंग, हम अपनी हेल्थ अच्छी रखें सो दैट फर्दर वी कैन गेट द गुड वर्किंग, वी कैन टेक अ गुड इनकम, प्रोडक्टिविटी अच्छी दे सकें. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. So here the chapter is end, students. For any of the query you can just text me or call me. Okay, thank you so much for today.